एक बैकलैश भी आ रहा है, जैसे आपने कहा कि देयर इज अ पुश बैक टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर इन द कंट्री। ये बहुत एक अहम चीज है। तो हमारे यहाँ जो समाज में ये लाइक फ्रैगमेंटेशन जो होता है, जो विभाजित हो जाता है हमारा समाज, वो तो हमें सब मालूम है। भाषा पे, जेंडर पे, एथनिसिटी, रीजन, ये सब चीज हो जाते हैं जो हमें अलग कर देते हैं, और एकजुट होकर काम करने के लिए एक बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। So we have to think. I've been working in two areas, specifically on empowerment of women and on building the capacities of the marginalized to promote their public role. And this understanding, ये जो मेरा सोच है कि ये public role हाशिए पे जो लोग हैं उनको public role लेना है या public voice देना है, यही मेरा पूरा एक 30 साल का काम का मकसद हुआ है और आगे भी रहेगी। और I think that is the important part, giving the voice, promoting the voices of those who have been silenced, particularly the lowered castes. हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली भाषा, और ये परिभाषा ठीक नहीं है। ये कोई अपर और लोअर नहीं होते हैं। सो आई ऑलवेज, एंड ये जो वर्ण और सवर्ण के बारे में जो चर्चा होती है, इसमें भी मेरा एक विभिन्न चिंता है। और मुझे लगता है कि ये सवर्ण बोलना is again reaffirming something called varna, which we know is it is an abstract category and has very practical realities of exclusion in our society. तो इसको सवर्ण कहना, अवर्ण कहना, मुझे लगता है कि भाषा में भी और एक्चुअल प्रैक्टिस में भी हमें इसको we should actually negate it by not talking about it in this manner. तो इसलिए मैं लो कास्ट के अलावा मैं लोअर कास्ट कह सकती हूँ, और मैं अपर कास्ट के ना बोलते हुए मैं usually say dominant caste. So I don't like to get because that is important. The politics and the language are very important, and that is why I feel that without this critical understanding and redefining the problem in our terms, बिना इस प्रयत्न का हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे. Otherwise we just fall into the same language and categorization that has been brought upon us. तो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव क्या है? जैसे हम आपने ऑलरेडी कह चुके हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है, ये रिजर्वेशन इट्स अ कंटेस्टेड टर्म, और काफी लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और they've actually succeeded in dismantling a lot of the real advantages that are supposed to accrue to the disadvantaged communities through reservation. जो affirmative action था, by not implementing, by being insincere, by harassing people who are trying to access this benefit or this facility, the mainstream dominant groups have succeeded in dismantling. वो एक बात, और दूसरी बात ये कि जब डिसमेंटल होता है, उसको एक और चीज है कि सबके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक 50% का एक आर्टिफिशियल एक लाइन लगा रखा है, एक लक्ष्मण रेखा की तरह, और उसको बीच में रखते हुए जो ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, जो ओबीसी पॉपुलेशन है, the estimates of that population ranges from 35% to 70%. और किसी को नहीं पता कि एक्चुअली कितना संख्या है ओबीसी के, लेकिन उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है? सिर्फ 27%. Just to fit into this Supreme Court artificial line, Lakshman Rekha of 50%.
this just shows कि ये जो system है इतना हमारे खिलाफ it is weighed against those who are struggling for representation. तो representation बहुत बड़ी चीज है. पहली बात जब representation देखेंगे तो आप gender के representation को देखेंगे, it's glaring. हमारे देश में औरतों का जो participation in any kind of activities, whether it is in paid employment or whether it is in education or in political office, बहुत ही कम है और घटता जा रहा है. इस नजदीक के टाइम में बहुत ही घटता जा रहा है because of so many factors, especially the politics which are ruling the country. तो ये जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का जो होल्ड है वो बढ़ता जा रहा है और नेचुरली औरतों का जो इसके स्टेटस ऑफ वुमेन इन दिस एंड द रोल हैज कंटिन्यूड टू बी रिड्यूस्ड. ये बहुत बुरी चीज है. और ऑलरेडी आपने विमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में बात किया और उसमें दो चीज है. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स of the women's reservation bill and then go on and take the next few minutes before I close to talk about the other important aspect. तो इसमें ये है कि when reservation was first brought about several years ago, I think it is now 30 years or so since the bill has been discussed, and finally now in the last session of the UPA, it was even passed in the Rajya Sabha but is now lapsed. इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि there is a huge double-tongued attitude जो औरतों को पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली देना चाहती है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब देना ही है तब तो उनको बहुत अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्शंस आते हैं. And so I think the important thing to remember here is that even the feminists who have been strongly advocating for women's rights, for women's political representation in positions of decision making and funding, that if that includes me, I'm not away from that. I've been part of that struggle for all these decades. But इसमें एक important चीज ये है कि for a long time, for the longest period, the feminist movement was divided on the idea of representation based on caste. And for a long time, the objection was raised by the backward class leaders, saying that if reservation is not also internal reservation is not given for women within women's reservation, then women from elite groups will take over and elite families will, that the whole will be complete, which turns out to be the right position. And I think in the recent year, in the past 7 or 8 years, women in general and feminist activists in particular have now come to see the correctness of this point of view. So partly perhaps even this has been this dilemma between feminists, how to approach this question, whether or not to accept caste-based reservation, internal reservation within reservation for women, was probably also one of the reasons why this has been delayed so badly. And so therefore, I would say that as has been in the rest of many progressive legislation, in many ways, legislation has anticipated the willingness of the society to accept progressive points of view. So now it is, of course, a stalemate. Nobody is talking about it, but except women who keep on, talking more and more. Some states have given 50%, not all have given 50% at the grassroots level. And now the move has been to increase the reservation from the 1/3 to 50%. And that is another morass. We do not know how it will all end. तो ये बात एक importantly मुझे बोलना है.